So hello friends, welcome to the new vlog of your channel and I'm really sorry आज बहुत दिन के बाद ये vlog आ रहा है। मैंने last time promise किया था कि vlogs जो है in every 15-20 days I'll be putting the new vlog but unfortunately इतने सारे काम आ जाते हैं कि फिर vlog बनाने का time नहीं मिल पाता है but I'll always try to be punctual if I can do that. ये देखो ऐसी गलती आप लोग मत करना जो अभी मेरे से हुई है। ये कार वाले कैसे भी कहीं पे भी टर्न करते हैं, मिरर चेक करना जैसे उनको आता ही नहीं है। खैर इसमें मेरी भी थोड़ी गलती थी अभी। Usually I don't overtake that much, but आज हो गया and I'm sorry for that. शाम को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप में से कितने लोग ये लकी नंबर्स पे बिलीव करते हैं? 555, 777 और दोज मिरर नंबर्स कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज मैं तो मानता हूँ। लिटरली आई फॉलो दीज थिंग्स। ये जो स्टीप टर्न है इस फ्लाईओवर पे चलाने के लिए बहुत अच्छा है, बट जो ब्लाइंड स्पॉट आता है एक साइड पे इट्स रिस्की, बिकॉज दूसरे साइड से लोग ढंग से नहीं आते हैं चला के। देखो बाइक चला रहा है, स्मोक कर रहा है, सब एक से एक विभूतिये हैं।
चलाते टाइम किसी वो सिगरेट का ऐश किसी के हाथ पे गिरे तो ये भाई साहब अपना चलाते हुए आगे निकल जाएंगे। हर चीज में नाटक है आजकल लोगों को। तो आजकल मैं देख रहा हूँ YouTube पे पल्सर N250 F250 पे बड़े वीडियोस बन रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं वीडियोस में, जहाँ पे लोग पल्सर को बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग नापसंद कर रहे हैं। सो आप में से कितने लोग पल्सर N250 N250 के डिज़ाइन को पसंद करते हैं? शेयर करना अपने थॉट्स, बिकॉज मुझे तो दोनों ही डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। As compared to F and N, I like N250 more, but F250 is also a good design because it's a fully faired bike. So eventually that faired bike will help you while you ride for the longer period and those highway rides. बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि we are not liking it और काफ़ी बुराई हो रही है। बट पर्सनली स्पीकिंग मुझे दोनों ही डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगे। थोड़ा सा पल्सर F250 में जो एक्स्ट्रा कट्स एंड क्रीजेस दिए है, दैट इज़ द थिंग विच आई थॉट शुड हैव बीन अवॉइडेड, बट ठीक है। कंपनीज भी सारी चीज़ें टेस्टिंग करने के बाद डिज़ाइन को फॉरवर्ड लेके जाती हैं। सो वन शुड रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कितना हार्डवर्क लगता है किसी एक डिज़ाइन को बनाने, उसको अप्रूव करने एंड उस पर इतना टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे सब जगह ब्रिजेस बन रहे हैं, धनाधन। इट सीम्स गुड, बट क्या ये सारे मेट्रोज और ये सब हेल्प करेगा मुंबई के इस ट्रैफिक को कम करने में? विल सी बाय द टाइम। ओए आजकल क्या हो जाता है, ये फॉल्स न्यूट्रल इतना क्यों आता है इसमें? ये देखो, एक तो गाड़ी फॉल्स न्यूट्रल्स दे रही है, ऊपर से ऐसे लोग कहीं से भी आ जाते हैं बिना हॉर्न दिए हैं। पता नहीं कब तक ये सब मेट्रोज बनेंगे, बट जिस दिन बन जाएगा इट विल बी ग्रेट। ये रही पल्सर 220 जिसको लोग बड़ा मिस कर रहे हैं, बट आई एम हैप्पी विद द डिज़ाइन। आई लव द डिज़ाइन। अब इसका एज हो गया है, दिस डिज़ाइन हैज़ एज्ड इनफ, सो वी शुड वेलकम द न्यू डिज़ाइन ऑफ F250. I know everyone is liking N250 more, but F250 is also one of the good designs that people can have. आपको 1,40,000 में they are giving so many things which you will not get in any bike, and even if they are giving you, they'll charge you so much that while paying it you'll feel that pain. एक शांत जगह मिले जहाँ पे उतर के I can stand for some time.
ये R15 लोगों को ये डिज़ाइन बहुत पसंद आता है, बट मुझे इसका डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया कभी भी, be it whatever the reason was, but it's absolutely a no-brainer bike. Only if you want to just get that feeling of a super bike or sports bike, then you can buy it. Otherwise, इसको चलाने में there is no comfort. And previously when it was 19.3 PS, then it was, at that time it was fabulous, because for a 150cc engine, the bike giving you 19.3 PS of power, that was fabulous. The design which is now, the design is great, but the power which has been decreased by 1.2 PS, I guess it's 18.6 now, or 18.4. So that seems to be too much of power decreased. ये कहाँ जा रहा है? समझ नहीं आ रहा उसको, यहाँ पे फुटपाथ है। ये देखो, इंडिकेटर उसका राइट का चालू है, आ रहा है इधर। अब एक से एक होशियार है। So let's stop at this place. It seems to be quieter. So एक look अपने बाइक पर, always love this black color of the Pulsar. And these indicators, बीट इनकी लाइफ उतनी नहीं होती जितनी एक क्वालिटी इंडिकेटर्स या इंडिकेटर्स गिवन बाय द कंपनी की होती है, बट स्टिल it's good, it's awesome. अच्छा, मैंने आजकल नोटिस किया है कि those videos or the shorts, YouTube shorts that I put in on my channel, I have seen people watching them. तो आप लोग में से कितने लोग चाहते हैं कि I should make a video on my workout sessions and the kind of diet that I take? If you people really want to know what are the workouts and what are the diets that I take, comment section में मुझे बताना. So I'll just go ahead, because I want the feedback from you people, so that I should go ahead and make a video for that. Oh, that view. यहाँ से वो बादल क्या दिख रहे हैं, पीछे सन जा रहा है एंड उसकी रोशनी, दैट्स फैबुलस. बहुत अच्छा वैसे बना रहे हैं यहाँ पे, सीमेंटेड रोड पूरी बिलो दिस मेट्रो ब्रिज. गुड, आई एम लविंग इट. देखते हैं जब ये मेट्रो ब्रिज इवेंचुअली रेडी हो जाता है, देन हाउ इट हेल्प्स टू अस एंड द पीपल हु आर द डेली ट्रैवलर्स. I wish it will help a lot. अभी तो लॉकडाउन जैसी चीज़ें चल रही हैं, तो still lots of people are working from home, so you'll not feel that much of need while traveling. As per now, but sooner when everything will be lifted up, everything will be taken off, the restrictions and all that, तब देखेंगे कि ये कितना हेल्प करती है, बिकॉज तभी हमें समझ आएगा कि ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं कि नहीं. ये ब्रिज भी स्टार्ट हो गया, बट अभी अपना काम नहीं है यहाँ से जाने का. किसी दिन आएंगे यहाँ से तो देखेंगे. But I'm happy to see this speed up work, क्योंकि लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं इस मेट्रो ब्रिज का.
तो जो मॉडर्न सेंट्रल रेलवे या ट्रेन पे पड़ता है, लोकल ट्रेन पे, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा फॉर श्योर. एंड इट विल फॉर श्योर हेल्प एवरीवन. घर की तरफ जाते हैं. तो मैं बहुत तो सोच रहा था दोपहर में आऊँ एंड थोड़ी राइड करूँ बाइक, थोड़ा सा लंबा राइड करूँ, बट नींद आ गई मुझे, मैं सोता ही रह गया. एंड अभी उठा तो मैंने बोला आज तो मुझे जाना ही है कैसे भी करके, अपने फ्रेंड्स के लिए ब्लॉग बनाना ही है फॉर यू पीपल. तो टाइम निकाल के आई केम आउट. And I'm feeling good, I'm feeling happy बाइक चला के. जब मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी, this is the story 12 years back. I didn't know how to ride a bike. I didn't knew this feeling, what exactly the feeling is. But from the day I got to know and I started riding a bike, from that day I can say this feeling is really something else. You can't explain it. While you ride a bike, that's one fabulous feeling no car can give. I drive a car as well, but still if someone will ask me which one to take, bike or car, I would definitely go with bike. कार का भी अपना मजा है, but फिर भी riding a bike gives you a different feeling. कार वाले बुरा ना मानना. I respect car drivers as well, but ये मेरा personal opinion है about riding a bike. That's what it is. Motor sticker good. ये वाला sticker मेरा मुझे भी change करना है. मोटर sticker का इसका डिजाइन थोड़ा सा फेड हो रहा है, कलर थोड़ा सा फेड हो गया है. चेंज इट. थोड़ा जोश में आ जाते हैं, बट जाने दो, आराम से गाड़ी चलाएंगे. हम तेज नहीं चलाने वाले हैं, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू रेस, आई एम हियर टू राइड. और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो राइड करने का जो मज़ा है, दैट्स व्हेन यू आर राइडिंग विद ईज. अगर आप बहुत फास्ट चला रहे हो तो फास्ट चलाने का मज़ा तभी आता है जब रोड खाली है. भरी हुई रोड्स में लिटरली देयर इज नो फन. एवरी नाउ एंड देन यू हैव टू apply the brake, and that's what I don't like. If you want to ride it completely free flow in the speed that you want. That's awesome.
ऐसा लगा जैसे बाइक पंचर जैसी हो रही है शायद। बीच में मुझे कुछ आवाज आई, क्या हुआ इधर? एक्सीडेंट हो गया क्या? अब ऐसी गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा? हुआ होगा एक्सीडेंट ही, और सीरियसली हुआ एक्सीडेंट। इतना रैश ड्राइविंग एंड राइडिंग इस रोड पे लोग करते हैं, घुसड़ दी गाड़ी है? अरे आराम से गाड़ी चलाओ यार, लोगों को पता नहीं क्या जल्दी रहती है? ये इनको देखो, वैसे कलर अच्छा है but the driving way is not good. बोलो ये सब सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं। सेकेंड हैंड बाइक्स को इतने लोग नखरे, बाइक्स rather it's car। तो अब चलते हैं घर फ्रेंड्स, एंड आप लोग मुझे बताना how was this vlog, the vlog which has come after I guess a month, and I'm sorry for this delay। अब चलते हैं घर एंड आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड आई विल डेफिनेटली कीप माय प्रॉमिस, try to be absolutely punctual in bringing up the vlogs। Getting through the bad times with you, I wasn't missing a thing or two, and I wish that I could put it in a machine, 'cause time moves on and now you're gone. Oh, if only I could put it in a machine, I'd come and तो अब get चलते हैं you. घर फ्रेंड्स, आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।